Hello everyone, a very good afternoon all of you. So technically as announced earlier, so this is our last, just give me a moment, this is our last session for the constitutional law, but as promised some of you have asked me, मुझे याद है, you have asked me to do certain topics. I will be doing those topics that I promised to you, but those topics will be covered on Monday or next week itself. That I cannot promise because I have to start with a new subject. But yes, coming Sunday or coming Saturday, okay, we can have those topics. Good afternoon, Ananya. Very good afternoon. Ananya, I think the playlist has not been of the remaining constitution classes is still not there. But rest assured, before Monday, you will be getting those. Alright, before we start with the next subject. So yes, please, am I audible to all of you? I didn't go for the tech check today. Good afternoon, Rupali. आवाज आ रही है मेरी? Can you hear me? Good afternoon, Tushita. Very good afternoon. See, so what I was saying is कि आज हमारा technically वैसे जो है वो constitutional law का last session है, right? But as I said, as you have suggested me certain topics, and I would request you to, I asked you to send it on over the Telegram as well. ठीक है? So we are left with as you were asking for Precedent Rule, Article 13 and one more topic someone told me, right? So we can go ahead with those topics. एक बार just send me the list over the Telegram. So I'll take care of it. And next, like what we can do is, coming Sundays or coming Saturdays, on Saturdays we can keep a day for, or Sunday we can keep a day for miscellaneous topics that are being left. That is what I am planning for you, right? So that can be done. So, and Monday say we can start with a new subject. So all of you, are you okay with it? Because since you have asked me to do it, so I don't want to leave it, I'll be doing those topics. ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं? अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ना एक लिस्ट बना के मुझे, ठीक है, आप लोग एक लिस्ट मतलब वही 4 टॉपिक्स, राइट? आर्टिकल 13, प्रेसिडेंट रूल, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप इसकी लिस्ट बना के या लिख के एक बार टेलीग्राम पे मुझे आप भेज दोगे तो वहाँ पे रिटन फॉर्म में मेरे पास रहेगा, तो मुझे भी याद रहेगा मुझे ये करना है, ठीक, राइट? अब सी, आज का जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है आपका, वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो बेसिक फीचर्स है, ठीक है? द टॉपिक इज बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एज आई सेड, इन द लास्ट क्लास मैंने आपसे कहा था कि आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि जो जितनी भी हमने पढ़ाई की है अभी तक, सो इट विल बी एन एक्यूमुलेशन ऑफ कल्मिनेशन ऑफ वॉट एवर वी हैव डन, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो आज आपको बस मुझे सुनना है, just listen to me carefully and start making your pointers. And ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, it is just like a revision, alright? It is just like a revision for you कि जो कि हम समझते हैं कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा. सीधी सी बात है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा. इज इट क्लियर विद एवरीवन जो मैं बोल रही हूँ? And yes, of course, if you are new, if you are coming for the first time, please do like the session, please subscribe to the channel and please share it with your friends as much as possible. ठीक है, फैलने दो इसे, शेयर करने दो, just share it with your friends. Okay, now coming back to the topic for today. जब हम constitution की बात करते हैं, तो constitution, Constitution of India is 1950. It's not just a law, it's not just a statute. Rather, you can say that it is that weapon, or it is that authority through which or guided by which you make another laws or other laws. All right? So it also becomes important. So basically, in order to carry out, भाई अगर स्टेट को अपना सोशल, तो मैं क्या कह रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केवल एक लॉ नहीं है,
ठीक है, जस्ट नॉट एनी अदर स्टैच्यूट. इट इज़ अ स्टैच्यूट विच इज़ अ बेंच मार्क, जो कि बेंच मार्क है और किसी भी लॉ के लिए और किसी भी स्टैच्यूट के लिए जो भी हम इंडिया में बनाते हैं या जो भी गवर्नमेंट बनाती है टू फुलफिल इट्स सोशियो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स. जो गवर्नमेंट की सोशियो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करने के लिए. ठीक है, सो आपको ये बात समझनी होगी कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए जब बात करते हैं तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कॉन्स्टिट्यूशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, दैट हैज़ बीन अ स्टेटमेंट विच इज़ गिवन बाय प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी एंड दैट इज़ हाउ यू राइट द आंसर्स इन योर मेन्स. मैं थोड़ा सा आपको इसका बता रही हूँ एनालिसिस, और फिर उसके बाद वी विल स्विच टू योर बेसिक फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के. So constitutionalism is more important. Now what is constitutionalism? So constitutionalism की जब हम बात करते हैं, let me write it down. At least मैं word लिख देती हूँ. स्पेलिंग ठीक है ना? एक बार चेक कर लेना प्लीज. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ऑलराइट, सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? So constitutionalism is basically, it is not just about, it is not just about giving powers. It is not just about giving powers. It is also about, how to restrain these powers. So when we talk of constitutionalism, what we mean over here is limited government. We need a government, but a limited government. Now what do we mean by that? It means कि जो government के पास पावर है इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसी गवर्नमेंट के पावर्स को आपको रिस्ट्रेन करने की भी ज़रूरत है. अगर आप उस पावर को रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, सो द गवर्नमेंट विल बिकम एन अथॉरिटेरियन, द गवर्नमेंट विल बिकम अ ऑपरेसिव गवर्नमेंट. ऑलराइट, so the fundamental rights will be violated. So that is why you have a very important chapter like chapter 3 in your constitution which talks about कि भाई ये फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करना ज़रूरी है. ठीक है, तो इसीलिए स्टेट एक्शंस अगर हैं, क्योंकि स्टेट एक्शंस इंपॉर्टेंट है, स्टेट के पास पावर होना इंपॉर्टेंट है, बट अगर स्टेट के पास पावर है और वो पावर जो है वो करप्ट कर रहा है, वो पावर जो है वो स्टेट टोटलिटेरियन हो गई है, अगर स्टेट के ने अपने सारे पावर्स को सेंट्रलाइज कर लिया है एक जगह पे, ठीक है, देयर इज नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होना शुरू हो जाएंगे. और जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो फिर जो है स्टेट अथॉरिटेरियन बन जाएगी एंड रूल ऑफ लॉ नहीं होगा. ठीक है, एंड देयर विल बी ओनली रूल ऑफ मेन. And we know that rule of law is one of the basic structure of the constitution, is one of the basic feature of the constitution जिस पे constitution को based किया जाता है. So इस background पे we need to understand that what are actually the basic features of the constitution. अब कुछ quick facts हम चलो बाद में समझेंगे. ठीक है, so जब या देख लेते हैं एक बार, and it will be there in your barracks also. So When was the constitution? यहाँ तक बात समझ में आई मैं जो कह रही हूँ आपको? Are you able to understand what I am saying, everyone? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तब मैं आगे चलूँ. Yes, no, what? ठीक है, सही लग रहा है आपको? ऑलराइट, ऑलराइट. सी, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, बताइए ज़रा. What is the adopting date of the Constitution? कब Constitution कब adopt हुआ था? 26 November
1949। ये कुछ डेट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। एडॉप्टेड, बच्चा एडॉप्टेड यहाँ लिख रही हूँ मैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स, यहाँ पे लिख रही हूँ, इट केम इनटू इफेक्ट, इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर सम फैक्ट्स विच comes in your PT. The original constitution basically, ठीक है, that had almost 395 articles. कोई बात नहीं, ठीक है, 395 articles, 22 parts, alright, and 8 schedules. The original constitution, ठीक, उसमें ये सारी चीजें थी। बट नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी आर्टिकल्स वी हैव? नाउ वी हैव 448 आर्टिकल्स, ऑलराइट, 25 पार्ट्स एंड 12 schedules. इसको लिख लीजिए आप, यू नो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। So, got the difference? Right? Exactly. 448 articles. So, all of you know that Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. I am presuming that everybody knows that who was the chairman of the drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Alright? And who was the president of the Constituent Assembly? ठीक है, सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। हु वॉज ये कुछ क्विक रिकैप हम कर रहे हैं, कुछ रिविजन कर रहे हैं। हु वॉज द लीगल एडवाइजर? लीगल एडवाइजर कौन था, ठीक है, और सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? सर बी एन राव। दीज 3 नेम्स आर इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट। सर बी एन राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? हाउ मच टाइम डिड इट टुक? इट टुक 2 years 11 months and 18 days, ठीक है। इट टुक 2 years 11 months and 18 days, इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। And B.R. Ambedkar, as he has been the chairman of the drafting committee, so he is also, you know, famously known as the chief architect of the Indian Constitution. So आपसे ऐसे करके भी पूछ सकते हैं कि you know who was the chief architect of the Indian Constitution. So who is that? ठीक है. So Dr. B.R. Ambedkar is considered to be the chief architect of the Indian Constitution. ठीक है. बाबा साहेब भीमराव Ambedkar. Now let's come to the features of the Indian Constitution. So these are the facts which you already know. So that was just a revision kind of a thing. Now let's come to the features. Basic features, or I'll write salient features, important features of Indian Constitution. ठीक है। सो सबसे पहला जो है वो ये है कि ये बताइए वेदर वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, वेरी गुड। सो ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं। आई नीड अ इंटरैक्टिव क्लास टुडे। वेदर वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जनरली एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन, अनरिटन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन, अनरिटन, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी
rigid, flexible. Single constitution. ठीक है. Constitution can be written, unwritten. Constitution can be rigid, flexible. ठीक है. Written constitution का example क्या है? US constitution. Unwritten constitution का example क्या है? UK constitution. Rigid or flexible, when we were talking about the amendment, then we discussed about it कि किस तरीके से आप जो procedure that you adopt to amend the constitution, on the basis of that, very good. So we have a written constitution. I am writing it down over here. The procedure that we adopt to amend the constitution, depending on that, so if the procedure is very rigid, very difficult, then in that particular case it is considered to be a rigid constitution. If the procedure is not so difficult, then we consider it to be a flexible constitution. Now we have a mix. We have a blend of rigid and flexible, because in certain cases, as we have discussed, उस वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं amendment जो हमने latest amendments की बात की थी. There I give you the background of Article 368. Actually, you know, I covered Article 368 over there. Still you want me to cover it in detail? Alright, anyway, so तो आपने वहाँ देखा होगा कि there are certain subject matters which can be done by amended by a simple majority, but there are other subject matters which can be only amended by special majority. So we have a blend of, I would write down, we have a blend of rigid and flexible constitution. Rigid plus flexible constitution. Alright, so our constitution is both rigid and flexible. ठीक है? Then as I think someone wrote, the size of our constitution, it is one of the lengthiest constitution. ठीक है? अगर हम length की बात करें, so it is one of the lengthiest constitution. See the number of articles we have. Alright. See the number of articles we have. और उसका reason क्या है? Because you know the entire structure basically, the basic ढांचा जिसे हम कहते हैं, the mold of this has been taken from where? Has been taken from the Government of India Act. ठीक है? So पहले से ही वो you know काफ़ी लंबा बड़ा था. ठीक है? So Government of India Act 1935. So that is why वहाँ से, and then also keeping in mind the diversity that India had, keeping in mind the population, the mixes that we have, the need of that particular time, it was felt कि हर एक चीज़ को cover किया जा सके. ठीक है, किसी भी एक प्रांत को, किसी भी एक कम्युनिटी को छोड़ा ना जाए, इसलिए जो है it was decided, you know, and all these things were brought into the constitution. Very good. Preamble we have already covered. रूपाली, preamble का वीडियो है. सबसे पहला टॉपिक जो था वो preamble ही था. Definitely, and that is one of the features, you know, of the constitution. Then उसके बाद क्या है? Yes, please quickly. आप बता रहे हैं मुझे, मैं नहीं बता रही हूँ आज. You are telling me, I am just discussing with you. These are the things that you should know, और यहाँ से question आता है. ठीक है? So whether we have a parliamentary or a presidential system of government, we have a parliamentary form of government. ठीक है? We have a parliamentary form of government. इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं. ठीक है? हम वेस्टमिनिस्टर पैटर्न फॉलो करते हैं. We have a parliamentary form of government. ठीक है? यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, this is the system of government that we follow. ठीक? So we are more into basically the responsibility as the union of ministers, as the ministers have to be responsible to the parliament. Alright? Exactly. वो bag of borrowings हम बात करेंगे उसके बाद, उसके बारे में. So we have, you know, taken this inspiration from the Westminster form of government. Alright? And basically that is based on the idea of responsibility. So that is why the ministers are collectively responsible. ठीक है? So that is, it is completely based on the system of responsibility rather than stability of the executive. So we have a parliamentary form of government rather than a presidential form of government. Now what is the fifth feature? Fifth feature is when जब हम parliamentary form of government की बात कर ही रहे हैं, so parliament sovereignty या power या comparison between the parliamentary sovereignty and judiciary. ठीक है, वो बिल्कुल अभी उस पे आ रहा है. पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सोवरेनिटी. अब ये क्या है? सी व्हेन यू सी, यू नो, पार्लियामेंट्री यानी कि पावर या इंडिपेंडेंस ऑफ पार्लियामेंट एंड दैट ऑफ जुडिशरी बेसिकली. सो व्हेन यू सी दिस,
when you see this particular power, so you will find that they are independent in their own way. ठीक है, हम judicial review का concept है हमारा, judicial review in order to check the arbitrary executive actions or legislative actions. But at the same time also do not forget that fine, Supreme Court and Parliament, they are supreme in their own manner. You also know that Parliament के पास ये power है कि वो कोई भी amendment करके Constitution में they can bring in the amendment in the Constitution and they can change the laws. Alright, if the laws are being passed and if they are made into an act, so they can bring in these changes in the Constitution. So that is why both the sovereignty, both the power, both the parliamentary power and the judicial power is important. They are independent in their own spheres. So कभी भी आप जैसे हम बात करते हैं ना, independence of judiciary है independence of judiciary, but then there are so many things that you will find in the discussions. So it's always better to say that the parliament and the judiciary, particularly the superior court, they are superior in their own sense. Alright, they are supreme in their own sense. Although there is the judicial review का concept, but still we cannot forget that Parliament can bring in changes in the law. That is what you have to remember. Then what is the next feature? The seventh one. Yes, please. Just a second. What is the seventh feature? I'll shift this upward, don't worry. Okay? एडल्ट फ्रेंचाइजी. क्या है ये एडल्ट फ्रेंचाइजी? हम बेसिक फीचर्स फेडरल उस पर आ रहे हैं क्योंकि उसमें हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट ब्रिंगिंग इट हियर राइट नाउ. और ये सारे आपके फीचर्स में आते हैं. इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी इट. बाद में मैं इसे छोटा करके दिखा दूंगी. सो व्हाट इज़ द सेवेंथ पॉइंट? एडल्ट फ्रेंचाइजी. व्हाट इज़ दैट एडल्ट फ्रेंचाइजी? आपको मुझे दो चीज़ें बतानी है. व्हाट डू यू मीन बाय एडल्ट फ्रेंचाइजी? ठीक है, फर्स्ट थिंग. Second thing, आपको मुझे ये बताना है when was the amendment in the age with respect to this concept of adult franchisee was made? Voting rights. Absolutely right. Alright. So there was this statement of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar that he said that that by parliament democracy what we mean is one man one vote. ठीक है. So it is like actually as an act of faith that it was considered that the founding fathers, they decided that we must opt for universal adult suffrage. We must opt for universal adult suffrage. So that is why it is universal. One person, one vote. So we must opt for, because we have a parliamentary form of government, a parliamentary democracy, government of the people, by the people and for the people. So for that it becomes very, very important that we must go for universal adult suffrage. That means everybody should have at once having equal voting rights. Alright? People should have equal voting rights. Clear? अब अमेंडमेंट क्या था इससे रिलेटेड? मुझे किसी ने बताया नहीं. रिलेटेड टू द, मैं इतना हिंट दे रही हूँ, विच वॉज डन एट द टाइम ऑफ द राजीव गांधी गवर्नमेंट. क्या था अमेंडमेंट? येस प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर क्विकली. 1 2 3 4 5 6. व्हाट वॉज द अमेंडमेंट दैट वॉज डन? ऑलराइट. The next, Abhi Rupali was talking about, sovereign, socialist, secular, democratic republic. So one of the characteristic feature of the constitution is, and वो preamble में जो भी लिखा हुआ है वो सारा कुछ आप उठा सकते हैं. आपको लगता है ना कि content अगर कम हो रहा है, so one of the feature is that it is a secular state. We are a secular state. Now what do we mean by secular state? We have already talked about it, that the government is not going to patronize any religion. Alright, rather there is non-discrimination towards any religion. ठीक है. So all religions are held equally in the high esteem by the state. सारे religion, सारे धर्म, सर्वधर्म संभव. Right, हमारा जो concept है वो क्या है? सर्वधर्म संभव. यानी हर religion, every religion is possible. So there is no single patronization of one particular religion.
All right, so all religions are equal or held equally and with high esteem in the eyes of the state. So there is no particular state religion. Patronize करेगी नहीं करेगी गवर्नमेंट, मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट ये है जैसे कि थियोक्रेटिक स्टेट में होता है, थियोक्रेसी, थियोक्रेटिक स्टेट में ये होता है कि द गवर्नमेंट फॉलोज अ पर्टिकुलर रिलीजन. All right, but here we are not a theocratic state, we are a secular state. So there is no state religion. Yes, absolutely. 42nd Amendment. Right. Then we know one of the most important is that fundamental right is one of the most important thing. That is your chapter 3. That is the charter of your fundamental rights. So fundamental rights are basically your inviolable rights. Inviolable rights means they are, they have a lot of sanctity, they are pure in itself, and they are also important for the sanctity of the constitution, because these are the fundamental rights only which helps in maintaining constitutionalism. वो जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की थियरी अभी समझाई थी. सो ये जो फंडामेंटल राइट्स है दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द constitutionalism, and constitutionalism is more important than a constitution. Why do I say so? Because a state might have a constitution but still not be having a constitutionalism. Alright, एक autocratic state अगर है तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, the rule of the state will be like a dictator. So that state might be having a book, a statute as a constitution, but still the state might not be having constitutionalism. And in order for the welfare of the people or the citizens, what is more important? Constitutionalism is more important. So चाहे वो fundamental right हो and next principle हो आपका DPSP, one of the important features. Why do I call it that this is one of the important features? Alright, I call it this is one of the important features because these are the ideals which ensures in maintaining constitutionalism. Alright, ये वो ideals हैं, directive principles of state policy, जिनको ध्यान में रखते हुए state अपने policies बनाती है, ठीक है, and that किसके लिए बनाती है? Welfare state के लिए बनाती है. So they help in actually governing the welfare of the people, and these are those ideas on the basis of which the policies, programs and actions are made. ठीक, बात समझ में आई? So that is why in a way, they help in ensuring constitutionalism. What next? बात समझ में आ रही है मैं जो कह रही हूँ? आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? ठीक है? Are you able to connect what I am saying? Everyone? Alright? Now, the next thing is citizenship. ठीक है? One of the characteristic feature, citizenship. So you know that we have one single citizenship. Any exception to this? One single citizenship. And after the Jammu and Kashmir Reorganization Act, it has become more strong. Like, so the population, basically can be divided into citizen and non-citizen. And you know that there are certain rights, alright, which are available only to citizens and not to everybody. But some rights exclusively, some, for example, fundamental rights. For example, your Article 15, 16, 19, 29 and 30. 15, 16, 19, 29 and 30. These are available to whom? These are available only to citizens. Alright. For example, only your citizens can be, they are eligible for holding certain office, जैसे कि President office, Vice President office, the judges of the Supreme Court and the High Court, the Attorney General of India, the Governor, all these offices, exactly, all these offices, alright, are held by whom? Are held by the citizens of India. ठीक है? Then the right to vote. क्या कोई भी आके, क्या outside citizen आके vote कर सकता है under Article 326 of the Constitution? No, the right to vote is only available to the citizen of India. The right to become a member of Parliament is only available to the citizen of India. So population can be divided into citizen and non-citizen. And there are certain rights which are only available for the citizens. ठीक है? Clear?
बट जब हम आर्टिकल 14 एंड 21 की बात करते हैं, सो आर्टिकल 14 एंड 21 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पर्सन वर्ड यूज हुआ है वहाँ पे. सो इट इज टॉकिंग अबाउट यू नो इवन द एलियंस राइट. ठीक है, तो आप नॉन सिटीजन भी, अगर आप नॉन सिटीजन हो या एलियन हो तो भी जो है आपको वो राइट्स अवेलेबल होंगे. ठीक. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू टॉक, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे पंचायती राज के बारे में मेंशन कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है वो यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में मेंशन कर सकते हो. हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव राइट नाउ एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज, व्हाट इज द नंबर, बताइए ज़रा. एंड वन मोर पॉइंट इज लेफ्ट. How many states and how many union territories? Yes, please. Pakka 28 states. Okay, and then someone was talking about that the constitution is a bag of borrowings. Now, why do we say that constitution is a bag of borrowings? All right. So there is a purpose to it. So different features of the constitution has been taken from different, has been inspired from, and then they are modified in our own way, as it suited to the Indian condition. All right. So different features have been taken from different countries. So for example, when I talk of a parliamentary form of government, अब आप ये लिखते जाइएगा, ठीक है. When we talk of parliamentary form of government, so that is taken from where? As I told you, that Westminster, ठीक है. Bicameral legislature की जब हम बात करते हैं, तो most of it is inspired from the UK and the Government of India Act, जो parliamentary form of government है आपका. फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से लिया है हमने? फेडरल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स. So that has been inspired from Canada basically, with strong center, vesting of residuary power in the center. ठीक है. So this is, and also vesting of the residuary power in the center. That is also one of the feature of strong center. तो वो कहाँ से लिया है हमने? From where we have taken it, we are inspired from the Canada. Then concurrent list from Australia. Directive principles of state policy from Ireland. ठीक है. Then the powers of the president, position and duties of the vice president, कहाँ से? USA. ठीक है. Preamble to the constitution. Basically, it is based on the American Declaration. जो हमारा preamble to the constitution है, ठीक है, वो objective resolution है, ठीक है. Objective resolution से inspired है, but basically it is based on the model of the American Declaration of Independence. अगर आप देखेंगे United Nations में से भी तो. Then organization and independence of Supreme Court, कहाँ से? USA से. All right. उसके बाद fundamental rights, of course the Charter of the Fundamental Rights, USA से. ठीक है. Fundamental duties, Russia, USSR. All right. Trade and commerce, Australia. Amendment of the Constitution, USA. So you pick up, single citizenship from Canada. All right. Procedure established by law, ये जो हम use करते हैं. So the procedure established by law is from where? From Japan. आपसे preliminary में पूछ सकते हैं, ठीक है. And emergency provisions हमने कहाँ से लिया है? From Germany, ठीक है. And Government of India Act, of course, 1935. So if you see, so we have actually, because at that particular time we were nascent, right? We were just like a little baby. So although we had our founding fathers who were quite intelligent and they were working upon and building upon this constitution, and वो बहुत ज़्यादा they had a vast knowledge of it, and ये vast knowledge का ही ऐसा था when they were reading world around about the different constitutions of the world. So that is how they came to this conclusion, and हर constitution से जहाँ से भी जो चीज़ें अच्छी थी and which are suitable to the Indian scenario, which are suitable to the Indian conditions and the people of the India, फिर उनके लिए जो है वो सारी चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट कर ली गई थी.
अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जिसके अराउंड सारा डिस्कशन जो है वो होता है, ठीक है, दैट इज़ योर पॉइंट नंबर 13 and we need space for this, so that is why I'm shifting this upwards. ठीक है, that what kind of, thank you for the flag Anasuya, so what kind of federalism we follow, ठीक है, the discussion is that what kind of federalism we follow, ठीक है, what is the concept of federalism, are we, you know, what are we are we a federal structure of the government or are we quasi federal, unitary federal जैसे कि कहा जाता है, and if at all हमें unitary federal या quasi federal कहा जाता है तो उसके पीछे कारण क्या है. अब फेडरलिज्म जनरली द वर्ड इज यूनिटरी फेडरल and why we are called as unitary federal, so there is reason for it which I'll be talking about 1 2 3 4 करके, ठीक है, हम बात करेंगे उसके बारे में. now the point is कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है. see फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं, let me change the color of pen. So when we talk of federalism, right, federalism is a form of government in which the political power basically, the sovereign authority basically is divided between the various units, ठीक है. फेडरलिज्म का मतलब ये होता है, आई रिपीट, कि जहाँ पे पॉलिटिकल पावर जो है वो सेवरल यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स के बीच में डिवाइडेड है, सेंटर, स्टेट एंड इवन म्यूनसिपैलिटीज एक्सेट्रा, यू नो. सो फेडरलिज्म का मतलब केवल सेंटर स्टेट नहीं है, अगर म्यूनसिपैलिटी, सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बेसिकली. तो जो पॉलिटिकल पावर है, जो सॉवरेन जो अथॉरिटी है, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल पे भी, ठीक है. सो समझने वाली बात यह है कि दे एग्जिस्ट एज अ कोऑर्डिनेट अथॉरिटीज, दे कोऑर्डिनेट अमंग ईच अदर, coordinate authorities in simple terms, ठीक है. एंड जो प्रॉपर फेडरलिज्म होता है, ट्रू फेडरलिज्म, एंड दे आर अ कोऑर्डिनेट अथॉरिटी, मतलब वो कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर कोऑर्डिनेट अथॉरिटीज. ये सिंपल, इससे सिंपल तरीके से आप नहीं समझ सकते, पर वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक का दूसरे पे कंट्रोल नहीं होता. वो कोऑर्डिनेट करेंगे बट एक का दूसरे पे जो है वो कंट्रोल नहीं होता है. नो, दिस इज अ ओल्ड अप्रोच ऑफ फेडरलिज्म, दिस इज अ क्लासिकल व्यू ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है. हालांकि इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, राइट, देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, बट दिस इज अ क्लासिकल व्यू ऑफ फेडरलिज्म. बट तो इसका फीचर क्या होगा बेसिकली, यू नो, इसका फीचर क्या होगा कि देयर विल बी ड्युअलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर. जो प्रॉपर फेडरलिज्म है उसकी बात कर रही हूँ कि ड्युअलिटी ऑफ गवर्नमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट होगा, ठीक है. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, केवल पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एंड कोर्ट्स विल बी सुप्रीम. बट जैसे कि यूएस में होता है एंड डिफरेंट कंट्रीज में, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. सो बट द पॉइंट इज कि जब हम इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, राइट, बट इंडिपेंडेंट है इन इट्स ओन सेंस. बट हैविंग सेड दैट, वी ऑल्सो नो दैट द पार्लियामेंट इज ऑल्सो सुप्रीम, सो द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज एंड चेंज इट. सो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो फेडरलिज्म है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, is exactly not the way, you know, it should be. It's not a classic federalism, right? Indian federalism is not a classic federalism, it is unitary federal. Now how do we say so? आपको ब्लू कलर दिखेगा तो मुझे बताना. So when we talk in, नहीं ज़्यादा हो गया, can you see green? Can you see green? Green दिख रहा है?
नहीं दिख रहा, बताओ मुझे जल्दी. So for example, let's see our legislative relations. ठीक है, let's see our legislative relations. Exactly. Can you see the green color? I think you can. ठीक है, so legislative relations क्या है? It's visible. So particularly Article 249, और ये आप लिखते जाइए, you know, Article 249 की जब हम बात करते हैं, so what does Article 249 says? Article 249 basically it empowers the Parliament to make laws with respect to every matter which is there in the state list. If it is necessary, it is in the national interest. अगर national interest में है, so Article 249 ये कहता है कि Center can make the laws whatever is provided with respect to the subject matter in the state list. ठीक इसी तरीके से यू नो आर्टिकल और लेजिस्लेटिव रिलेशंस में आप ये सब आर्टिकल्स लिख सकते हैं. आर्टिकल 249, आर्टिकल 253. Now what does Article 253 says? Article 253 talks about, you know, giving effect to international agreements or treaty. 3, ठीक है, 3 से treaty. Alright. So अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी को इफेक्ट करने के लिए कोई सेंटर को, पार्लियामेंट को लॉज बनाना पड़ता है, ठीक है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस द पार्लियामेंट इन द नेशनल इंटरेस्ट 249 हो गया. गिविंग इफेक्ट, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी ऑल. सो गिविंग इफेक्ट टू द ट्रीटीज, ठीक है, उसके लिए स्टेट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट मैटर है तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. ठीक इसी तरीके से यू नो अगर कोई जैसे कि इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स. So the laws made by the parliament, whether it is passed before or after the state law with respect to the matters which are there in the concurrent list, so to the extent of the repugnancy, कौन सा law sustain करेगा? वो law जो कि parliament ने बनाया है. I repeat, if there is a inconsistency between the law made by the parliament and the state legislature, और चाहे parliament ने वो law पहले बनाया है या state legislature के बनाने के बाद बनाया है, ठीक है, सो उस केस में किस पे, सब्जेक्ट मैटर पे, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे, ठीक है. सो उस केस में किसका लॉ सस्टेन करेगा? सो टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी, अगर इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, सो द पार्लियामेंट लॉ विल प्रिवेल. ठीक, ये कहाँ प्रोवाइडेड है? ये आपके आर्टिकल 246 में प्रोवाइडेड है. हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं. देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो कि हमें ऑल्सो यू नो कई बार जो है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द यस वन मोर थिंग कि कई सारे केसेस में you know when we were talking about the bills that previous sanction of the president is required for the introduction of certain bills in the state legislature, right? So for example article 304 is one such example कि यहाँ पे जो है आपको president का sanction लेना पड़ेगा in order to bring in that law bill in the state legislature. So this is also in a way, you know, these legislative relations indicate towards that how we have a strong center. All right, then administrative and executive relationship, you know that all the planning is done. अब अगर हम administrative relation की बात करें और executive relation, administrative executive relation, right? So all the planning, even if you have नीति आयोग, पहले planning commission था, अब नीति आयोग है, so all the planning is done basically at the central level, you know that, right? And then ऑल इंडिया सर्विसेज की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? सेंटर रेगुलेट करता है. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. उसके बाद आर्टिकल 365 ऑथराइज करता है यू नो टू द प्रेसिडेंट टू होल्ड द सिचुएशन हैज अराइजन दैट अ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल जो आपकी प्रेसिडेंट रूल की आप बात कर रहे थे वो कहाँ पे प्रोवाइडेड है? वो आर्टिकल 365 में प्रोवाइडेड है. सो अगर इफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी taken out according to the provisions of the constitution, तो constitutional breakdown, ठीक है, breakdown of the constitutional machinery के ground पे जो है
प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है. एंड इवन एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी यू नो दैट कि क्या होता है. ठीक है, आर्टिकल 352 के टाइम पे हमने देखा था, हमने 358 आर्टिकल 358 359 भी पढ़ा था, ऑल दीज थिंग्स. सो जनरली क्या होता है that the center becomes strong, the center can take the powers of the state, and then basically they are, you know, the state legislatives, they don't carry that much of power and authorities in their matters as far as the center has, right? So this is a special situation which arises during the time of the emergency. ठीक. 365 टॉक्स अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पे आप कर सकते हो, इमरजेंसी डिक्लेयर आप 356 में करते हो. ये दोनों आर्टिकल देख लीजिएगा. ठीक है, पर्पस जो है वो 365 में दिया हुआ है और डिक्लेयर आप 356 में कर सकते हो. सी बोथ द आर्टिकल्स, राइट. ठीक. सो बेसिकली अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 365 से मिलती है. ठीक है. फाइनेंशियल रिलेशंस में भी यू नो, जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सो स्टेट का क्या प्रोसीड होगा, कैसे होगा, ऑल दीज थिंग इज डिसाइडेड बाय होम, ऑल दीज थिंग इज डिसाइडेड बाय सेंटर. ऑल्सो द स्टेट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर फॉर देयर, यू नो, फॉर देयर ग्रांट इन एड्स. स्टेट रिसीव्स अ लॉट ऑफ ग्रांट इन एड्स. आपने देखा होगा कई बार, जैसे अभी पैंडमिक के टाइम पे भी बहुत बार आपने हल्ला सुना होगा, या कोई फ्लड आ जाता है या इस तरह की चीज़ आती है, कोई सिचुएशन अराइज होती है. ठीक है, या फिर किसी और डेवलपमेंटल वर्क के लिए, वेलफेयर वर्क के लिए, तो स्टेट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर फॉर द फाइनेंशियल ग्रांट. सो दैट इज हाउ द फाइनेंशियल रिलेशन इज. देन व्हाट एल्स? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर. सो डू यू थिंक दैट द गवर्नर इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द स्टेट ओवर देयर? जो गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं, क्या वो गवर्नर जो है वो केवल स्टेट के लिए काम कर रहे हैं वहां पे? सी, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इज आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट. ऑलराइट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. ऑलराइट, सो he always acts in the manner, you know, which is pleasant to the president. Alright, so when you say pleasant to the president, that means to whom? To council of ministers, basically. Alright, so as such they are not, you know, acting per se for the state. Now that is a, okay, yes, absolutely, they are the agents of the center. That is what the word is being used for them. ठीक है. Then आपको ये भी पता है कि सिंपल मेजॉरिटी से द पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स. ऑलराइट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड बाउंड्रीज कैन बी ऑल्टर्ड, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज. प्लस हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, बट वी हैव सिंगल सिटीजनशिप. सो दीज आर द थिंग्स दैट, यू नो, आई जस्ट राइट डाउन सिंगल सिटीजनशिप और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप. ऑलराइट, सिंगल सिटीजनशिप. देन व्हाट एल्स? इमरजेंसी प्रोविजंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है. यूनिफॉर्म एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. यूनिफॉर्म जुडिशरी, ऐसा नहीं है कि सेंटर और स्टेट में कुछ अलग अलग है. अल्टीमेटली द अपील विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ऑलराइट, देन when you talk in terms of freedom of trade and commerce and all these activities, alright, and there are so many features which actually declares, when you talk about it, that we are basically not a true federalism or a classic example of federalism, but rather बहुत फेमस, यू नो, प्रोफेसर वेरे का जो है एक फ्रेज यूज होता है, that is we are quasi federal. What are we? We are quasi federal. But when you talk in terms of Austin, so Austin says that this is a, so we have separation of powers. So Austin, and but not in the rigid sense of this terms. So Austin says that this is what, I'll change the color of pen, this is cooperative federalism, and this is more of a positive word. We have a cooperative फेडरलिज्म. ठीक है.
Many people have said many things, even in the words of Dicey. Dicey has said that the need of basically the concept of federalism or the extent of federalism in India is watered down. ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, एलएलएम के लिए ये फिट होगा. इवन जुडिशरी में आप ये लिख सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इज बेसिकली वाटर्ड डाउन. उस पर पानी पड़ गया. किस वजह से? बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट as required by the India in this particular country. ठीक है. So इस वजह से जो है the requirement of a country which has to be nationally integrated, politically and economically coordinated, and socially, intellectually and spiritually uplifted. Alright. So because of all these things, ये जो concept है हमारा फेडरलिज्म का, प्योर फेडरलिज्म का, क्लासिक फेडरलिज्म का, that has been, ठीक है, watered down. बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कहना है कि वी आर फेडरल इन द सेंस ऑफ द टर्म दैट एज वी स्टैब्लिश अ डुअल polity. So these are the things that you can use in your answers. You can go through the video and you can make your pointers, and आपके पास ये complete ये complete I would say notes हैं या concept हैं in order to deal with this question. If someone asks you that, let me see if I can reduce the size and you can, बहुत छोटा हो जाएगा. बहुत छोटा हो जाएगा, राइट? यू कांट सी इट, आई थिंक. So I repeat, I'll just repeat. So what are the salient features of the Indian Constitution? It is a written constitution. It is a blend of rigid and flexible constitution. It is one of the lengthiest constitution. We have talked about it. It is a parliamentary form of government. All right. Then the sovereignty of parliament and judicial sovereignty. We have adult franchisee, okay, universal adult suffrage. Then we have a secular state. There is a, chapter 3, fundamental rights, which talks about it. We have DPSP, all right, one single citizenship. We are the bag of borrowings, kahan se kya liya hai. We have discussed all that, all right. And lastly, but not the least and the most important, we are unitary federal. And wo kyun hai unitary federal? So when we talk about, legislative relations, when we talk about administrative, executive relations during the time of emergency, your financial relations, appointment of government, formation of new states, alteration of boundaries, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं बताती हैं single citizenship, united and integrated judiciary. So all these things tells us that we are federal in our own way, in the sense. So we some people said that, Professor Vere said that we are quasi-federal. Austin says that this is a concept of cooperative federalism. Dicey says that our concept of federalism has been watered down, all right, because of the need of the development and the need of being to uphold the national integrity and to uplift the spirituality. Okay, but Dr. B.R. Ambedkar says that we are federal in the sense of the term that we maintain dual polity. So this is all for in this short session, as we can understand that what are the basic features of the Constitution. I told you how that constitutionalism is more important than your just having a particular act or law, all right, and what is the significance of it. And then also we have talked about that कि कुछ certain facts कि constitution कब adopt हुआ था, कब आया था, and all these things which you can read. ये आप खुद से revise कर सकते हैं, खुद से चीज़ों को देख सकते हैं. So that's all from my side from today. Monday we are starting, just a second. Yes, so Monday we are starting with a new subject, all right. Please share it with your friends and do like the session, and please be regular, because if आप लोग आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा if we'll be coming to the class. And just let us know if any other topic if you want to. No, tomorrow there is no class. Tushita, no class for tomorrow. We will meet on Monday, everyone. We will meet on Monday, all of you. ठीक है, हम अब Monday मिलेंगे. And
ठीक, हम मंडे मिलेंगे 1 बजे, वही जो हमारा 1 बजे वाला टाइम है उस टाइम पे मिलेंगे. ऑलराइट, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट another subjects. We will start with fresh topics. और जो topics रह गए हैं, so as a request, I would request you that please, you know, send me over the telegram so I can just have a look at it. ठीक, and I can plan that how to move ahead. So thank you so much all of you for joining in and God bless. And पढ़िए, रिवाइज करिए, सारे जो भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी मंडे से पहले. So just, you know, keep on revising things, and that is the key. Revise, revise and revise. The more you revise, the more you can, you know, your concepts gets clear. जितना आप revise करते हैं दिमाग खुलता है, उतना आपका confidence बढ़ता है. So keep on revising and subscribe to the channel and do like us and share it with your friends. So alright, so thank you so much all of you. Take care. I'll see you on Monday again. Bye bye.